हेलो एवरीवन आज आम टॉपिक कौन पिला ना हाइपरबोला ओके। तो आम सर्कल चलती एलिप्स अच्छी पाराबोलास अच्छी आज हाइपरबोलास आम नेक्स्ट यार कॉनिक सेक्शन क्वेश्चन दुईटा पार्ट क्वेश्चन करवा 80 प्लस क्वेश्चन अच्छी से दुईटा पार्ट क्वेश्चन करके कंप्लीट करवा। ओके सो हाइपरबोला बेसिक डेफिनेशन कौन ना ई शुड बी ग्रेटर देन 1 एसेंट्रिसिटी कौन होता दरकार ग्रेटर देन 1 होता दरकार डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा डेल्टा माने कौन डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A स्क्वायर कौन बात कर पहले A स्क्वायर इज लेस देन AB A स्क्वायर इज लेस देन AB दिस इज द हाइपरबोला कंडीशन। अच्छा डेफिनेशन कौन होता है फिर डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला देख पे एनालिटिकल डेफिनेशन अच्छी जियोमेट्रिकल डेफिनेशन अच्छी बट गोटे स्टैंडर्ड डेफिनेशन अच्छी जो डेफिनेशन हाइपरबोला को एक्जाक्टली डिफाइन करियो कौन कहूँ ना ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट कौन बुझला ना ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ all points in a plane the difference of whose distance from two fixed point हमें ये विषय भी कथा फिक्स्ड पॉइंट कौन कह जाए इन द प्लेन is constant कौन बुझल ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट ना ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट द फिक्स्ड पॉइंट कौन कह फोकस करवा इन द प्लेन इज कांस्टेंट ओके बोले और जो डिफरेंसटा मन से डिफरेंसटा कौन हम ना डिफरेंस is equal to difference equal to distance of further point minus distance of the closure point अब यहाँ बेसिकली 2a कह जाए हमें आगे को डिस्कस कर ओके सो ए हाइपरबोला आम कौन डेफिनेशन ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 डेल्टा इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस F स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 और A स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू AB यार आउ गोटे डेफिनेशन कहमें ए हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स whose distance from fixed point and fixed line whose ratio of distance from fixed point and fixed line always greater than 1 एमती एसेंट्रिसिटी नहीं डेफिनेशन नहीं डिफाइन कर कॉनिक सेक्शन डेफिनेशन कौन थी डिस्टेंस the ratio of distance from the fixed point and fixed line is always constant से constant है greater than 1 है then this will be hyperbola so सही हिसाब से हमें definition में देखी पे जाएगा hyperbola is the set of all points in a plane such that the ratio of distance from the fixed point and fixed line is always greater than 1 हाँ बोले अच्छा नेक्स्ट को जीवा आउ किसी डेफिनेशन अच्छी लिखी देवा टे कौन ना जो दुईटा फिक्स्ड पॉइंट कथा कहली टू फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड two fixed point are called focus or foci of the hyperbola ये जो डेफिनेशन मुझे लिखिल ना ये डेफिनेशन आम आउ थे डिराइव करवा ओके से डेफिनेशन आउ थे बुझा ट्राए करवा मुझे गोटे पॉइंट गोटे लिखिदिए आउ थे बुझा एवं आउ गोटे कौन कहला ना द मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट of the line segment joining the foci is called center of the hyperbola कौन कहि सेंटर जोटा फोकस को जो लाइन जॉइन कर तार मिड पॉइंट कौन कह बोले सेंटर ऑफ द हाइपरबोला
हम बोले एवं another point the line through the foci is called जोटा फोकस देखिए पास कर दुटा फोकस देखिए पास कर कौन कह जाए पे ट्रांसवर्स एक्सिस and the line through the center and perpendicular to transverse axis is called conjugate axis ताको कौन कही पे conjugate axis दुटा लाइन अच्छे जो दुटा लाइन की जो सेंटर भीतर देखिए पास कला गोटे लाइन ताको ट्रांसवर्स एक्सिस कही जोटा एक्चुअली मेजर एक्सिस कहते एलिप्स एंड ताको जोटा परपेंडिकुलर ताको हम माइनर एक्सिस एठी हे जिवो ट्रांसवर्स एक्सिस आ गोटे conjugate axis ट्रांसवर्स एक्सिस टा कोन के मेजर एक्सिस conjugate axis टा माइनर एक्सिस एटा एक्जेक्टली एलिप्स सहित समान एलिप्स जेमिति प्रॉपर्टी या मध्ये सेमिति प्रॉपर्टी ओके नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट को आसीबा नेक्स्ट कोन कहला पले the point at which hyperbola intersect the transverse axis कहला पे जिते गोटे कनिक गोटे ट्रांसवर्स मेजर एक्सिस को कनेक्ट कर इंटरसेक्ट कर पॉइंट कौन कर देता है वर्टेक्स पर होता है तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर दी हाइपरबोला सहित इज कॉल्ड वर्टिसेस इंटरसेक्ट द ट्रांसवर्स एक्सिस आर कॉल्ड vertices of the hyperbola are called vertices of the hyperbola. ଏବେ मेन पॉइंट ଟିକେ लिखिदेवा ना डिस्टेंस बिटवीन फोकस और डिस्टेंस बिटवीन फोकी कौन लिखी पहले 2a डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस कौन पहले 2a अच्छा फोकस C2C बाबा डिस्टेंस बिटवीन फोकस 2C सॉरी डिस्टेंस बिटवीन फोकस होची 2C हाँ फोकस कोऑर्डिनेट का सी जीरो माइनस सी जीरो सो इट इज 2c डिस्टेंस वर्टेक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं a जीरो माइनस जीरो सो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस 2a ओके सो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस will be 2a and length of conjugate axis will be 2b okay and the relation between a b and c is c square is equal to a square plus b square मन रखियो c square is equal to a square plus b square अच्छा c टा कौन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस ए टा कौन पहले एटा है सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस बी टा कौन सेमी कंजुगेट एक्सिस हम बोले अच्छा एबे आसीबो एसेंट्रिसिटी को जदि मु डिफाइन करबी एसेंट्रिसिटी एलिप्स कौन कहितली ना डिस्टेंस इज इक्वल टू c by a so distance between center and focus divided by center and vertices distance between center and vertices so you have to remember all these common formula how pele ebe asiba standard equation of hyperbola kon pele standard equation of hyperbola standard equation of hyperbola kon koch pele now standard equation is obtained when the center is at origin and the axis of the hyperbola is on x-axis or y-axis कौन बुझा लगे नहीं तो मुझे कौन लिखी देवी टिके द इक्वेशन ऑफ hyperbola is said to be standard
is said to be standard equation or simple if the center is at origin, center টা কোনটা হবে origin, and the focus or foci are on x or y axis. আচ্ছা foci x and y axis মানে কোন বুঝিবি ফোকাসটা সবে কোনটা হবে ট্রান্সভার্স axis মেজর axis হবে তানে এমিতি ବି কই পাই মেজর axis along x axis or y axis কোন বুঝিলা। আচ্ছা এই যে টাইপর আমি হাইপারবোলা কেতেটি পাইবা না সো দে আর টু such hyperbola we have এইভাবে আমি কেতটা হাইপারবোলা পাইবা আর দুইটা হাইপারবোলা পাইবা। সো দুইটা হাইপারবোলা ইকুয়েশন লিখি দেবা কোন হবো সো the equation of two such hyperbola is called what? One is like this, here equation x square by a square minus y square by b square is equal to 1, x square by a square minus y square by b square equal to 1. Another one, okay, yeah equation कौन जो पहले ना x square by minus a square plus y square by b square is equal to 1. There are two types of hyperbola. এইটা को कहा जाए hyperbola, এইটা को कहा जाए conjugate hyperbola. এটা কোন কहा जाए conjugate hyperbola. conjugate hyperbola हवा बोले। अच्छा एबे देखिए सेमानकर आमे प्रत्येक पॉइंट को आमे इंडिविजुअली डिस्कस करबा conjugate hyperbola का कहबा और हाइपरबोला का कहबा এবং তার इंडिविजुअल पॉइंट को डिस्कस करबा। तो फर्स्ट में लिखिबी ना स्टैंडर्ड इक्वेशन এটা যে প্যারাবোলা হাইপারবোলা এটা যে কনজুগেট হাইপারবোলা সো হাইপারবোলা ইজ x স্কয়ার বাই a স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1, এটা যাব x স্কয়ার বাই মাইনাস a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1. দিস উইল হাইপারবোলা and this will be conjugate hyperbola. conjugate hyperbola. Okay, প্রথমে কোন আছে না সেন্টারটা কোনটি নেছি অরিজিন রে সো সেন্টার উইল বি 0 0. ওকে আচ্ছা এটা দেখলো এলিপস টাইপ দেখা যাওনি এলিপস কোন কইছিলা যোনটা বড় থিব সেটা হই যাব কোন মেজর অ্যাক্সিস রইব এটি দেখো বি র কোএফিসিয়েন্ট নেগেটিভ আছে ফার্স্ট এটি বি র কোএফিসিয়েন্ট নেগেটিভ আছে তানে जो সেন্টার বা ফোকাস রইব কোনটি রইব এক্স অ্যাক্সিস রইব এটি দেখো এ র কোএফিসিয়েন্ট নেগেটিভ আছে তানে বি টা বড় হবে বি মানে সেন্টারটা কোনটি রইব সেন্টার অফ ফোকাসটা কোন রইব y অ্যাক্সিস উপরে রইব তানে ট্রান্সভার্স অ্যাক্সিসটা কোন রইব মেজর অ্যাক্সিস রইব হুইচ ইজ along y অ্যাক্সিস বুঝিছ না। আচ্ছা ইয়ার গ্রাফটা আমি কই দউছি এটি দিস ওয়ান ইয়ার গ্রাফটা দিস ওয়ান হবো। আচ্ছা সেন্টার গলা সেন্টার পর কোন আসবে পিলে না ভার্টিসেস ভার্টেক্স কোন পিলে ইয়ার ভার্টেক্স কোন হবে পিলে প্লাস মাইনাস a0 প্লাস মাইনাস a0। अच्छा यार कहाँ पे 0 प्लस माइनस ऑफ बी 0 प्लस माइनस ऑफ बी कहीं y कोऑर्डिनेट रे अछि एटा y कोऑर्डिनेट रे अछि एवं तार कोऑर्डिनेट को वर्टेक्स कोऑर्डिनेट को प्लस माइनस बी हो। अच्छा वर्टेक्स पर कोन आसे बिले वर्टेक्स पर कोन लिखि फोकस लिखि पाइबी फोकस और फोकी कोन प्लस माइनस c0 प्लस माइनस c0 प्लस माइनस c0। अच्छा c टा को कोन लिखि पाइबी c टा को लिखि पाइबी ae0 प्लस माइनस ae0। अच्छा एठी कौन जीवो ना 0 प्लस माइनस सी 0 प्लस माइनस सी ताको कौन लिखि पिले 0 प्लस माइनस बी 0 प्लस माइनस बी हबो। सो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मेजर एक्सिस लेंथ केते जीवो 2a यार मेजर एक्सिस लेंथ केते जीवो 2b। सो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस केते जीवो 2b यार केते जीवो 2a हो ना नहीं बोले नेक्स्ट को जी। अच्छा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एलिप्स से कौन पढ़ते पहले x इक्वल टू a बाई एटी भी से x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई जेहेतु मेजर एक्सिस along x एक्सिस एटी मेजर एक्सिस along what y एक्सिस तो y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई। अच्छा एसेंट्रिसिटी कौन करी एसेंट्रिसिटी
एसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू कौन हम पे ई इज इक्वल टू सी बाई ए अच्छा सी कौन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थिला तने तय अच्छे स्क्वायर तने कौन लिख पे रूट अंडर 1 प्लस बी बाई ए होल स्क्वायर कहि परबी बी बाई ए होल स्क्वायर हम पे अच्छा एटी एसेंट्रिसिटी के जो ई इज इक्वल टू सी बाई बी तो सी बाई बी माने कौन जो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो एटा कौन जो 1 प्लस ए बाई बी होल स्क्वायर ए बाई बी होल स्क्वायर हम पे तो जब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बचाए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कौन हो अच्छा लेंथ ऑफ लैटिस माने पका सेठी कौन था 2b स्क्वायर बाई ए एटी भी जो 2b स्क्वायर बाई ए सो दिस विल बी 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए 2 इंटू सेठी एलिप्स कौन होता 2 इंटू सेमी माइनर एक्सिस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेमी मेजर एक्सिस एटी भी हो से अच्छा एटी माइनर एक्सिस की एक्स एक्सिस जिते रोचे तार मेजर एक्सिस ताने या माइनर एक्सिस की जो बी हो एटी वाई कोऑर्डिनेट सेकंड टा कहसे कंजुगेट हाइपरबोला माइनर एक्सिस की पिले माइनर एक्सिस हो ए ताने कौन लिखी 2a स्क्वायर बाई बी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आउट तरफ को जवाब है अच्छा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पर इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लिखि पाइबी इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अच्छा इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस माने क्या कौन बोले ना इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस बेसिकली इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कौन है जो ना एटी मेजर एक्सिस कौन y एक्स एक्सिस इक्वेशन केते y इक्वल टू 0 सो y इक्वल टू 0 एटी मेजर एक्सिस केते बोले ना y एक्सिस इक्वेशन x इक्वल टू 0 सो सेमी दाव कौन लिखि पाइबी इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस कौन ना y एक्सिस इक्वेशन x इक्वल टू 0 एटी कौन जो y इज इक्वल टू 0 इजी अच्छा एबे कौन ना फोकस फोकल डिस्टेंस लिखी फोकल डिस्टेंस कौन बोले ना ई एक्स प्लस माइनस ए सेटी भी से आइतला एटी हे जो ई वाई प्लस माइनस बी ई वाई प्लस माइनस एक्स इज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ई वाई प्लस माइनस बी इज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फॉर द कंजुगेट हाइपरबोला अच्छा डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट कौन लिख पाइबी difference of the focal distance of a point difference of the focal distance of a point कौन हम पहले ना this will be 2a it is 2a it is 2b हो पहले so this is all about your hyperbola this is all about your हाइपरबोला एबे आ गुटे छोटे पॉइंट रखिदेबा ताले आमे हाइपरबोला सहित तापर आसीबा प्रॉपर्टी जदि मो पाखे सेंटर पिले कौन अच्छी एटा चेंज कर सेंटर अच्छी एच के ताने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कौन है जीवो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कौन लिखिबी सेंटर जदि एच के गला ताने x माइनस h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y माइनस k होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर is equal to 1 with the center of center जदि h के हुए ताने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी दिस हम पिला इजी एबे टिके लक्ष्य कर दियो एटा को okay so this is all about your hyperbola now comes to properties of hyperbola एथरा में प्रॉपर्टी लिखियो देखो नेक्स्ट पेज को जीवा प्रॉपर्टी लिखिया भाई नेक्स्ट कौन सी पिले ना पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कौन कहूची ना x इक्वल टू a sec थीटा और y इज इक्वल टू b sin b tan थीटा पिले b tan थीटा आर द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन पैरामीट्रिक फॉर्म कौन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ना x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तार पैरामीट्रिक फॉर्म कौन हो x इक्वल टू a sec थीटा y इज इक्वल टू b tan थीटा दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक नेक्स्ट कौन आछे ऑक्सिलरी सर्कल आम एलिप्स पढ़ते कौन ना तार जो
मेजर एक्सिस लेंथ जदि तार डायमीटर हुए से दिखे पास हुए से ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ दी एलिप्स एलिप्स ऑक्सिलरी सर्कल इक्वेशन कौन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एटी कौन हो एटी भी सेम सिचुएशन द सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला लाइन जॉइनिंग वर्टिसेस माने कौन ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ स्टार्ट कौन हो डायमीटर हो सो मैं एमती लिखि पाइबी द सर्कल हुज diameter is the line joining the vertices or vertex of the hyperbola so let's say this is the hyperbola vertices eta gote vertices eta gote दुटा vertices this one एबे ए दुटा vertices डायमीटर की जो सर्कल पास हे से सर्कल कौन कहि ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द हाइपरबोला अच्छा या इक्वेशन कौन जदि वर्टेक्स मु एटा नेले एटा सेंटर बिले दिस विल बी सेंटर 0 0 सेंटर कौन 0 0 वर्टेक्स कौन हो a0 एटा जीवो -a0 तन इक्वेशन ऑफ केते जीवो रेडियस a अछि तन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर तने सेम इक्वेशन एलिप्स जहाँ लग जाए सर्कल इक्वेशन हाइपरबोला मते सेम ऑक्सिलरी इक्वेशन अब बोले नेक्स्ट के जीबी नेक्स्ट कौन कहला ना पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला पोजीशन ऑफ ए पॉइंट with respect to hyperbola so position of point let equation of hyperbola x square minus a square y square by b square is equal to 1 এবং point নেলি p whose coordinate is x1 and y1 so এটা को s ने कि s1 माने पॉइंट को पुट करबे थी जदि पले s1 is equal to 0 हला ता माने कोन बुझिबी पॉइंट is on hyperbola बाकी जिते गुड़ा कनिक कर्व अच्छी जिते गुड़ा कनिक सेक्शन अच्छी सब सेम साइन बट ए हाइपरबोला अपोजिट साइन यदि मु s1 जदि पले ग्रेटर देन 0 कहबी ताने सब कनिक सेक्शन ग्रेटर देन 0 पाइन कोन होतला आउटसाइड होतला एथि कोन हिजबो ना पॉइंट इज इनसाइड ऑफ हाइपरबोला कौन बुझे ना अच्छा एच न कही मुझे एच कह दिए बेटर हम ओके सो h1 जदि लेस देन हुए जो इनसाइड होतला एटा इज पॉइंट आउटसाइड पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ हाइपरबोला ओके नेक्स्ट बुझिबा पिले नेक्स्ट कौन आसीबो ना कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड हाइपरबोला हमें कंडीशन देखिबा कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए हाइपरबोला एंड लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें देखिए यूटू हमें टेंजेंसी बाहर करवा सो लाइन मु कौन नेली y इज इक्वल टू mx प्लस c हाइपरबोला दिस इज l एंड h कौन नेली बिले x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द हाइपरबोला अच्छा फास्ट कथा होची कोन ना जदी लाइन टा l इज टचेस जदी लाइन टा टच करिवो काहा को हाइपरबोला को जदी लाइन टा हाइपरबोला को टच करिवो ताने कंडीशन कोन हबो ना c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर if the line touches the hyperbola the condition is what c square is equal to a square m square minus b square if does not अच्छा टच कला जदि से कोन करियो पले इंटरसेक्ट करिवो टच और इंटरसेक्ट भितर कोन टच कले गुटे पॉइंट टच करे इंटरसेक्ट कले भितर दी पास करि पायो सो इंटरसेक्ट माने टच माने टेंजेंसी कंडीशन बेसिकली दिस इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी आल्सो कंडीशन फॉर टेंजेंसी एटा को लिखिबी टेंजेंसी ओके तापर कौन हम ना इंटरसेक्ट इफ द लाइन इंटरसेक्ट द हाइपरबोला इंटरसेक्ट ताने कौन ना c स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दीज आर दी वेरी वेरी इंपोर्टेंट इथे डायरेक्ट क्वेश्चन बने इंटरसेक्ट करियो माने कौन ना c स्क्वायर टा ग्रेटर देन हो a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जे डज नॉट इंटरसेक्ट करे नहीं डजंट इंटरसेक्ट माने कौन हिजबो ना c स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटरसेक्ट करिवो अब अच्छा एबे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बाहर करिवो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बाय कंडीशन फॉर टेंजेंसी लिखि देबी सो कंडीशन
फॉर टेंजेंसी गोटे लाइन गोटे हाइपरबोला को टेंजेंट होती लाइनटा कौन ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हाइपरबोला कौन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो टेंजेंट होती तो वाई लाइन इज टेंजेंट लाइन इज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला टेंजेंट टू द हाइपरबोला ये टेंजेंट नहीं तो कंडीशन कौन हम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन हो बोले दिस विल बी प्लस माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कौन हो प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या मन पड़ी यहाँ एलिप्स भी आम एमती पाई हम बोले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स सो फर्स्ट कौन आसो ना पॉइंट फॉर्म फर्स्ट कौन आसो पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अच्छा इक्वेशन आप आगे लिखिदेवी पॉइंट लिखिदेवी कौन ना x1 y1 पॉइंट आम बाहर करवा हाइपरबोला कौन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कौन लाइन कौन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये तीन टा पॉइंट फॉर्म कौन कहूँ ना x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट फॉर्म तापर स्लोप फॉर्म जदि लाइन स्लोप एम थी स्लोप फॉर्म कौन जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन पॉइंट है ना ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई सी माने कहते ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट आउट के प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पॉइंट ऑफ टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो था से हम अच्छा नेक्स्ट पैरामेट्रिक फॉर्म कौन था पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म कौन हम बोले पैरामेट्रिक फॉर्म रे ना दिस कैन पैरामीटर कौन ए सेक थीटा और बी टेन थीटा सो पैरामेट्रिक फॉर्म में कौन हो ना दिस कैन बी एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हम अच्छा एबे कौन ना द टेंजेंट्स आर द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट जो पॉइंट कह से पॉइंट आम बाहर कर दीटा टेंजेंट अच्छे आम पाखे दीटा टेंजेंट इंटरसेक्ट कर से दीटा पॉइंट टेंजेंट जब इंटरसेक्ट कला इंटरसेक्टिंग पॉइंट आम केमती बाहर कर लेट्स से देयर टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट कौन ना ए सेक थीटा 1 आउ बी टेन थीटा 1 यहाँ गोटे पॉइंट टेंजेंट एंड आउ गोटे पॉइंट कौन ना ए सेक थीटा 2 बी टेन थीटा 2 ये दुटा पॉइंट दुटा टेंजेंट रहा ये दुटा पॉइंट दुटा टेंजेंट रहा तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट ये दुटा पॉइंट जो टेंजेंट रहा से दुटा टेंजेंट इंटरसेक्ट करे से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी व्हाट नाउ वी कैन राइट ए cos theta 1 minus theta 2 by 2 divided by cos theta 1 plus theta 2 by 2 सेमिति a sin theta 1 minus theta 2 by 2 divided by sin theta 1 plus theta 2 by 2 this will be b b okay this is the point of intersection of tangents through the points this a and b let's say this is the a point or b point a point to b point to दुटा टेंजेंट रहला से माने को पॉइंट इंटरसेक्ट करबे ना a cos theta 1 minus theta 2 by 2 divided by cos theta 1 plus theta 2 by 2 b sin theta 1 minus theta 2 by 2 divided by sin theta 1 plus theta 2 by 2 अब अच्छा नेक्स्ट कौन आसीबो मोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो कौन पहिले ना 2a hyperbola 2 टेंजेंट दुटा टेंजेंट रन हम
two tangent can be drawn from a point outside of the hyperbola, from a point outside of the hyperbola. ताने आम पाखरे कौन अच्छे पे ना बाहर पॉइंट बाहर गोटे दीटा पॉइंट रू बाहर जेकोसी गोटे पॉइंट रू दीटा टेंजेंट आम ड्र कर टू हाइपरबोला टू टेंजेंट कैन बी ड्रन फ्रॉम ए आउटसाइड पॉइंट आम दीटा टेंजेंट ड्रन कर कौन हाइपरबोला ओके तबे एबे आसो कौन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला कौन इक्वेशन नॉर्मल फर्स्ट आसो पॉइंट फॉर्म में कौन कौन पे ना ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भल से मन रखिए पे ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द पॉइंट फॉर्म ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तब स्लोप फॉर्म ना y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस m into a square plus b square divided by root under a square minus b square m square. It is a slope form of equation normal to the hyperbola y is equal to mx plus minus m into a square plus b square divided by root under a square minus b square into m square. एवं पॉइंट कौन पॉइंट रे स्लोप कौन पॉइंट रे एटा नॉर्मल हबो ना प्लस माइनस a square divided by ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर रूट एटा जो का प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एटा नॉर्मल हबो टू दी हाइपरबोला नेक्स्ट को जिबा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कौन हबो प्ले ना ए एक्स सेक थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस थीटा बाबा ए कॉस थीटा ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी हाइपरबोला ओके सो अच्छा आउ गोटे पॉइंट मन रखिया पे कौन पॉइंट ना 4 नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रन फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द हाइपरबोला अच्छा तो आम एबे आउ गोटे पॉइंट कौन आसला ना आम मन रखी ना गोटे हाइपरबोला बाहर आउटसाइड पॉइंट दीटा नॉर्मल दीटा टेंजेंट ड्रन हम और नॉर्मल केते ड्रन हम ना चारिटा नॉर्मल फोर नॉर्मल्स कैन बी ड्रन एनी पॉइंट कैन बी ड्रन to the hyperbola from outside point थाने आउटसाइड पॉइंट दीटा टेंजेंट ड्रन कर आउटसाइड पॉइंट चारिटा कौन पे नॉर्मल ड्रन कर कौन हाइपरबोला ओके एबे आसीबा इंपोर्टेंट पॉइंट किछि फर्स्ट इंपोर्टेंट कौन कहूची ना इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट so equation of pair of tangent कौन बोले s1 equal to t square s1 कौन ना हाइपरबोला एट द पॉइंट अच्छा हम लिखि देछि बोले p अछि हम पाके हाइपरबोला कौन अछि x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एटा अछि s1 कौन ना जो पॉइंट है x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस हाइपरबोला विल बी माइनस इक्वल टू 1 टी कौन पे ना x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस y1 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 सो दिस इज द पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम नेक्स्ट आसो कौन अच्छा आउ गोटे पढ़ा आम कौन पे डायरेक्टर सर्कल कौन देला ना द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of
perpendicular tangents is drawn to given hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1 is called director circle, and whose equation is given by कौन लिखी बिले ना x square plus y square is equal to a square minus b square is the equation of director circle. एलिप्स कौन थिला प्लस थिला एठी का हो जो माइनस हो बिले इजी. नेक्स्ट को जेबी equation of chord of contact is ना x minus x1 by a square minus y1 by b square equal to 1 और t equal to 0 कौन पॉइंट है at x1 y1 पॉइंट पॉइंट आउटसाइड इतो तो इक्वेशन ऑफ chord of contact equal to this हो बोले. नेक्स्ट सो इक्वेशन ऑफ chord of contact टेंजेंट सहित समान एटा टेंजेंट होय देखा जाउ x1 by a square इक्वेशन ऑफ chord of contact equal to इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब एबे कौन आसबे ना इक्वेशन ऑफ द chord of the hyperbola which mid point given अछि इक्वेशन ऑफ chord of hyperbola whose midpoint is x1 y1 is given by t is equal to s1 is the equation of the chord whose midpoint is x1 y1 अब नेक्स्ट को जेबे बेले ना अच्छा एटा हो जे कंडीशन ऑफ टेंजेंट मो पास गोटे इक्वेशन अछि कोन ना इक्वेशन ऑफ लाइन lx plus my plus n equal to 0 एटा नॉर्मल हो ए लाइनटा कोन हो नॉर्मल टू द हाइपरबोला नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला लाइनटा हाइपरबोला प्रति नॉर्मल हो केते बेले जते बेले a square by l minus b square by m is equal to a square plus b square divided by n square ये कंडीशन सैटिस्फाई कला तने एटा कहि जो लाइन को नॉर्मल हाइपरबोला को नॉर्मल नंबर टू द हाइपरबोला इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ए लाइन को नॉर्मल हो बोले इजी. नेक्स्ट को जेबी नेक्स्ट कौन कहला ना एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला asymptotes of hyperbola कौन कहूँ पे ना द इक्वेशन ऑफ द टू asymptotes of the hyperbola is given by कौन हम ना y is equal to plus minus b by a into x. This is the two equation of asymptote of the hyperbola और एटा को हमें एमती कौन थी पहले x square by a square minus y square by b square is equal to 1 एथि हमें पहले एटा हम एवं asymptote थीटा कौन हम let's say these are the asymptote like एटा गुटे इनफाइनाइट टच कया भय लागियो किंतु टच करिवो ना दीज आर द टू एसिम्पटोट्स हो बिले. अच्छा एबे कोन पॉइंट लिखिबी फर्स्ट पॉइंट आसला हाइपरबोला एंड conjugate hyperbola have same asymptote asymptotes दी जंका कोन बोले सेम एसिम्पटोट हो एंगल between the asymptotes TS asymptote कौन हो 2 tan inverse b by a 2 tan inverse b by a is the angle between two asymptotes हो बोले. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट the product of perpendicular from any point on the hyperbola to asymptotes is equal to the product of perpendicular distance from any point on the hyperbola
on the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1 to its asymptote is equal to a square b square divided by a square plus b square. So कौन कहला the product of perpendicular from any point to the hyperbola to its asymptotes. hyperbola को perpendicular होइतो एवं asymptote को perpendicular होइतो सेमान को डिस्टेंस प्रोडक्ट कौन a square b square divided by a square plus b square. इजी. नेक्स्ट को जेबे अच्छा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अभी मन रखा कौन ना the bisector of the angle between the asymptotes are coordinate axis. Bisector of the angle between the asymptotes are what? Coordinate axis. Okay. Next as a complete rectangular hyperbola. So what do you mean by rectangular hyperbola? A hyperbola whose asymptotes are perpendicular to each other. A hyperbola whose asymptotes are perpendicular to each other is called rectangular hyperbola. Asymptote perpendicular. Equation of rectangular hyperbola is what? X square minus y square is equal to a square. X square minus y square is equal to a square is the rectangular hyperbola. And asymptote कौन है तो y is equal to plus minus x be the asymptote. This is the asymptotes. हो बोले अच्छा नेक्स्ट को जी when the center of rectangular hyperbola is at origin and its asymptotes coincide with the coordinate axis. Then equation of rectangular hyperbola. Is xy is equal to c square and whose eccentricity is equal to √2. कॉमन रखला जिते बाय सेंटरटा कौन होइतो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ओरिजिन पाखे थिबो एसिम्पटोट कॉन्साइड होइतो कौन कोऑर्डिनेट एक्सिस होइतो देन द इक्वेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज xy इज इक्वल टू c स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपर बेसिकली एटा होइছে एमिति एटा जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एटा रेक्टेंगुलर हाइपर এই রেক্টাঙ্গুলার হাইপার এসেন্ট্রিসিটি কে দেইজো e = √2 হবো e = √2 আচ্ছা এবে রেক্টাঙ্গুলার হাইপার কিছু পয়েন্ট গুড়া আমি লিখিবা সো ফার্স্ট পয়েন্ট কোন আসবে বলে না প্যারামেট্রিক কোঅর্ডিনেট অফ রেক্টাঙ্গুলার হাইপারবোলা কোন হবো না c/t t is the parameter c is the coordinate of center and focus कौन है जो बोले focus will be plus minus √2 into c plus 0 directrix equation of directrix कौन है जो बोले x is equal to plus minus c √2 x is equal to plus minus c √2 এটা focus वाला equation directrix equal plus minus है जेमति हुए सीधा अच्छा अब कौन है बोले ना equation of chord joining joining point T1 and T2 is x plus y T1 T2 is equal to c into T1 plus
t2, x plus y t1 t2 plus c into t1 plus t2. Equation of tangent in point form. Equation of tangent in point form x by x1 plus y by y1 is equal to 2. Equation of tangent in point form. Yeah. So point of intersection of tangent. Point of intersection of tangent. Intersection of tangents. Point of intersection of tangent कौन बोले ना 2c t1 t2 divided by t1 plus t2 এটা कौन जो 2c divided by t1 plus t2 is the point of intersection of tangent. Equation of normal कौन होगा equation of normal कौन जो बोले ना x x1 minus y y1 is equal to x1 square minus y1 square. This is the equation of normal. अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म. कौन बोले ना एक्स टी क्यू माइनस वाई टी माइनस सी टी फोर प्लस सी इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म. हम बोले लास्ट कौन आसो बोले लास्ट गोटे पॉइंट रही जाइए मुझे कहीदे बोले ना कौन ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म कौन बोले ना एक्स बाई टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू 2c. x by t plus yt is equal to 2c. Okay, so this is all about your hyperbola. This is all about your hyperbola.